Good morning, 10th standard. We already learning this chapter, life processes in living organism, part 1. In this chapter, we already seen our aerobic respiration, anaerobic respiration, the formation of the ATPs, ADPs, as well as both Krebs cycle in anaerobic respiration and aerobic respiration. So, as well as we see the energy from different food components. And we started in last lecture our cell division, which is essential life processes. In this we already learn about mitosis. What is the mitosis? In mitosis we see the prophase, metaphase, anaphase and telophase are there. It's a cell division. It's a somatic cell division which takes place in our whole body in cells as well as in plant, in animals. Okay, now we see about the next division, which is meiosis. Meiosis takes place in only a जर्म सेल्स. कहाँ पे होता है ये? जर्म सेल्स. ये सोमेटिक सेल्स में होता है माइटोसिस और जर्म सेल्स में होता है मियोसिस. ओके, नाउ सी meiosis is completed through two stages. These two stages are meiosis first and meiosis second. See, we see in mitosis it's completed in 4 stages. Okay, but this meiosis is completed in 2 stages only. First one is recombination or crossing over between two homologous chromosomes. Crossing over two homologous chromosomes. It is in fertilization stage. Thereafter, those homologous chromosomes, not sister chromatids. See, in mitosis, sister chromatids are formed, but in meiosis, there is no any sister chromatids. It's a homologous chromosome. जो chromosomes है उसमें वही are divided into two groups. ये chromosomes two groups में divided होते हैं and thus two haploid cells are formed. यहाँ पे डायरेक्टली क्रोमोजोम्स ही डिवाइड होते हैं और हैप्लॉइड सेल्स फॉर्म होती है. प्रोफेज फर्स्ट इज गिवन ईयर. क्रोमोजोम्स देखो आप, मेटाफेज सेकंड में भी क्रोमोजोम्स के पेयर हो गया है क्रॉस होने के बाद. देन एनाफेज सेकंड, देन टेलोफेज सेकंड. सो प्लीज रिमेंबर दैट हियर द homologous chromosomes are divided only directly, and not sister chromatids are formed in like the meiosis. In like a mitosis. Mitosis में क्या होता है? जेनेटिक मटेरियल क्रोमोसोम्स ये डिवाइडेड होके क्रोमेटिड बन जाते हैं, लेकिन यहाँ पे जो है होमोलोगस क्रोमोसोम्स ही डिवाइडेड होता है. प्लीज सी दिस, ऑब्जर्व दिस डायग्राम. Meiosis second is just like a mitosis. Meiosis second कैसे? माइटोसिस के जैसे ही होता है, but it's in a germ cells. In this stage, two haploid daughter cells are formed in meiosis 1, undergoes division of separation of recombinant sister chromatids and 4 haploid daughter cells are formed. यहाँ पे भी सेकेंड फेज में क्या होता है? यहाँ पे डिवीजन होता है, सेपरेट क्रोमेटिड्स का पेयर हो जाते हैं और 4 हैप्लॉइड डॉटर सेल्स आर फॉर्म. वहाँ पे 4 हैप्लॉइड डॉटर सेल्स फॉर्म होते हैं. प्रोसेस ऑफ गैमेट प्रोडक्शन एंड स्पोर फॉर्मेशंस ऑकर बाय द मियोसिस. जो फ्लावर्स में होता है गैमेट प्रोडक्शन एंड स्पोर फॉर्मेशंस ऑकर बाय द मियोसिस. मियोसिस से ही होता है. हमने देखा है ना स्पोर्स फॉर्मेशन कैसे होता है. डिवीजन इन प्लांट्स चैप्टर में देखा है ना कि फर्न कैसे रिप्रोड्यूस करता है. रिप्रोडक्शन मेथड्स क्या होता है? स्पोर्स फॉर्मेशन, वेजिटेटिव फॉर्मेशन, मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन. तो वहाँ पे ये मियोसिस होता है. इन दिस सेल डिवीजन 4 हैप्लॉइड and daughter cells are formed from one diploid end cells. During this cell division, crossing over across between the homologous chromosomes and thereby the genetic recombination occur. यहाँ पे क्या होता है? ड्यूरिंग सेल डिवीजन क्रॉसिंग ओवर अक्रॉस बिटवीन होमोलोगस क्रोमोसोम्स, thereby the genetic recombination occur. यहाँ पे क्रोमोसोम्स जब क्रॉस हो जाते हैं तो उनका कॉम्बिनेशन होने के बाद ये सेल डिवीजन होता है. ड्यू टू दिस ऑल द 4 डॉटर सेल्स आर जेनेटिकली डिफरेंट फ्रॉम द पेरेंट सेल फ्रॉम
ईच अदर टू। ये जेनेटिकली डिफरेंट हो जाता है ना, बिकॉज पेरेंट सेल, दो पेरेंट्स के सेल मिक्स क्रॉस होने के बाद ये फॉर्म होते हैं, इसलिए ये चेंज होते हैं जेनेटिकली पेरेंट सेल से। ड्यू टू दिस ऑल द डॉटर सेल्स आर जेनेटिकली डिफरेंट फ्रॉम द पेरेंट सेल फ्रॉम ईच अदर टू, और एक दूसरे से भी डिफरेंट होते हैं। Apparatus: conical flask, glass sides, cover sleeve, forceps, compound microscope, watch glass, etc. Material: medium size onion iodine solution. Here we are going to do practical about the somatic cell. Somatic cell में जो होता है माइटोसिस, इसका ये प्रैक्टिकल है. Procedure: take a medium size onion, keep it in a conical flask filled with water in such a way that the roots of onion will be in contact with water. Observe the roots of onion after 4 to 5 days. Cut the tip of some of the roots and put them in a watch glass. Pour some drops of iodine watch on that glass. Iodine is what? Indicator here. Take one root tip of a glass slide. Press it with the help of the forceps. Add 1 to 2 drops of water. Carefully place cover slip over it in such a way the air will not be trapped between. Observe the prepared glass slide under the microscope and observe it. Which phase of cell division did you observe? Sketch in its various phases of cell divisions occur in the root tip of onion, which are shown in the following figure. Which of those could you see in the slide? ये तो सोमेटिक सेल डिवीजन है. यहाँ पे क्या होगा? माइटोसिस ही होगा. और आपको यहाँ पे देखना है कट करने के बाद पहले तो कवर स्लिप स्लाइड लेना है, उसके ऊपर ये कट करके इसका कट करके पार्ट डालना है, उस पर आयोडीन डालना है. आयोडीन डालने के बाद उस पर कवर स्लिप लगाना है, और कवर स्लिप चढ़ाने के बाद आपको उसको ऑब्जर्व करना है अंडर द माइक्रोस्कोप. तो वहाँ पे आपको ये ग्रो कर रहा था. That onion is growing. That's why we see here some mitosis cell division जो सोमैटिक सेल में होता है. तो हमने जो यहाँ पे फिर पहले से देख लिए ना, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज, ये यहाँ पे होते हैं. We see this process in the somatic cell division of the onion. So you have to observe that slides and you have to conclude this question. What do you mean by diploid 2n cell? Diploid, haploid पढ़ा है ना पहले ही. तो diploid cell क्या होता है? What do you mean by haploid cell n? Diploid में डबल हो जाता है, haploids में उसके आधे हो जाता है. What do you mean by homologous chromosome? Homologous chromosomes क्या है? Whether its gametes are diploid or haploid, why? How are the haploid cells are formed? What is the importance of haploid cells? यहाँ पे आपको स्ट्रक्चर दिया गया है फेजेस ऑफ माइटोसिस इन ऑनियन रूट टिप. तो ये जो फिगर दी गई है ऑनियन रूट टिप की, ये ऑब्जर्व करके आपको ये सारे क्वेश्चंस लिखने हैं. दिस इज वन काइंड ऑफ होमवर्क टू यू. ये आपका होमवर्क है. यहाँ पे हर एक फिगर में कौन सा स्टेप चल रहा है, एनाफेज, लोगोफेज, जो भी है, जो माइटोसिस के कौन से स्टेज चल रहे हैं, ये आपको लिखना है. यूज ऑफ ICT. Collect the videos and photographs of different life processes in living organisms. Prepare the presentation and present it on the occasion of science exhibition. आप PPT भी बना सकते हैं आपके लिए. ये आपको आसान रहेगा याद रखने के लिए भी. Books are my friend. Read different encyclopedia of technical terms in biology and anatomy and other reference book. ये भी आप पढ़ सकते हो जिसको आपको नॉलेज मिल सकता है. आपका होमवर्क है राइट डाउन दिस फुल एक्सरसाइज ऑन पेज नंबर 21. हमारा चैप्टर खत्म हो गया है. इसमें अगर आपको कोई भी क्वेरीज है, यू मे आस्क मी ऑन माय व्हाट्सएप नंबर. इन अवर नेक्स्ट लेक्चर वी आर गोइंग टू स्टार्टेड दिस चैप्टर लाइफ प्रोसेसेस इन लिविंग ऑर्गेनिज्म पार्ट 2. तो ये चैप्टर में हम देखने वाला है रिप्रोडक्शन. इट्स असेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. सी द एनिमल इज रिप्रोड्यूस, दैट्स व्हाई वी सर्वाइव. Our species is survive. तो हमको ये देखना है रिप्रोडक्शन इज असेक्सुअल एज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. देन रिप्रोडक्शन एंड मॉडर्न टेक्नोलॉजी.
रिप्रोडक्शन के लिए मॉडर्न टेक्नोलॉजी कैसे यूजफुल है, क्या करती है, इसके बारे में हम यहाँ देखेंगे. देन रिप्रोडक्टिव हेल्थ of male and female as well as the animal. The population explosion, जो population बढ़ रहा है, explosion is a population is a global problem nowadays. तो हमको ये भी देखना है population explosion. Which are the important life processes in living organism? लिविंग ऑर्गेनिज्म में कौन से लाइफ प्रोसेस इंपॉर्टेंट है? विच लाइफ प्रोसेस आर असेंशियल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड बाय द बॉडी? विच लाइफ प्रोसेस आर असेंशियल फॉर प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड बाय बॉडी? हमारे बॉडी के लिए कौन से लाइफ प्रोसेस असेंशियल है जिससे एनर्जी जनरेट होती है? विच मेन टाइप्स ऑफ सेल डिविजन्स एंड व्हाट आर द डिफरेंसेस? सेल डिवीजन किस प्रकार के होते हैं और उसका डिफरेंस क्या है? सेल डिवीजन क्या होता है? हु स्टडीड वेरियस लाइफ प्रोसेसेस इन प्रीवियस क्लासेस? हमने तो लाइफ प्रोसेस प्रीवियस क्लासेस में बहुत सारे देख लिए. क्रोमोसोम्स, व्हाट आर द रोल ऑफ क्रोमोसोम्स इन सेल डिवीजन? सेल डिवीजन में क्रोमोसोम्स का रोल क्या होता है? और सेल डिवीजन कैसे होता है ये तो हमने देख लिया, मायोसिस एंड माइटोसिस. व्हाट विच वन इज सोमेटिक सेल? माइटोसिस. एंड जर्म सेल्स में मियोसिस होता है. ये सेल डिवीजन हो जाता है उसमें. इन दिस चैप्टर वी सी अबाउट asexual reproduction of binary fission, multiple fission, budding, fragmentation, budding and vegetative propagation. These all we are going to learn now in asexual reproduction. And in sexual reproduction, gamete formation and fertilization. Asexual reproduction in plant, sexual reproduction also in a plant we are going to learn here. With this double fertilization एंजियोस्पर्म. एंजियोस्पर्म में जैसे डबल फर्टिलाइजेशन होता है ये भी देखेंगे. आफ्टर दैट वी आर गोइंग टू लर्न हियर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बीइंग, ह्यूमन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम एंड ह्यूमन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम. देन ग्रोथ ऑफ डेवलपमेंट एंड बर्थ. Then menstrual cycle in women. Then reproduction and modern technology. With the help of that we see vitro fertilization, IVF, surrogacy, sperm bank, semen bank and twins. And again we see about reproductive health of human. In this chapter we are going to learn this kind of things only. Shall we start today? Yes, why not? We have studied various life processes in previous class. All those life processes, that is nutrition, respiration, excretion, sensation, response, control and coordination, are the essential which is to living organism to remain alive. जिंदा रहने के लिए ये सारे प्रोसेस हमको चाहिए होते हैं. क्या क्या यहाँ पे? न्यूट्रिशन, दैट वी ईट for nutrition. Respiration, we exhale and inhale. Excretion, we excrete waste material, eliminate waste material from our body. Sensation and response, हमको हम रिस्पॉन्स भी देते हैं और हमको कुछ सेंस भी हो जाता है तो हम उसको प्रतिक्रिया भी देते हैं. आर द असेंशियल टू ईच ऑर्गेनिज्म लिविंग इन रिमेन अलाइव. ये सब लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए जिंदा रहने के लिए जरूरी है. बिसाइड दिस लाइफ प्रोसेस one more life process occurs in living organism is reproduction. ये जो सारे लाइफ प्रोसेसेस है इसमें बहुत ज़रूरी है लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए रिप्रोडक्शन भी. However, the reproduction does not help to organism to remain alive. जिंदा रहने के लिए हमको वो जो पर्टिकुलर पेरेंट्स उसको जिंदा नहीं रह सकते, बट इट्स हेल्प टू मेंटेन द कंटिन्यूटी ऑफ द स्पीसीज दैट ऑन ऑर्गेनिज्म. रिप्रोडक्शन नहीं होगा तो ये स्पीसीज जो भी है एक्सटिंक्ट हो जाएगी, मीन्स खत्म हो जाएगी. तो ये स्पीसीज को मेंटेन करने के लिए, कंटिन्यू करने के लिए, फॉर आवर इकोलॉजिकल बैलेंस ऑन द अर्थ वी नीड रिप्रोडक्शन. डज नॉट हेल्प ऑर्गेनिज्म टू रिमेन अलाइव. जिंदा कायम मीन्स हम जिंदा ही रहने नहीं वाले हैं, लेकिन हमारी स्पीसीज आगे बढ़ेगी.
इसके लिए हमको रिप्रोडक्शन चाहिए. ऑब्जर्व द पिक्चर एंड टेल द लाइफ प्रोसेसेस विच यू आइडेंटिफाई. हियर इज द लाइफ प्रोसेसेस. क्या है बताइए. hen is given that eggs as usual here. Is the plant is growing. Here the plumule radical is we see in figure number C. What do you mean by the maintenance of species? जिसे आपको maintenance of species क्या होता है. Then whether the new organism is genetically exactly similar to earlier one that has produced it. जो ऑर्गेनिज्म जिससे आप बर्थ देने वाले वही सेम होता है या अलग होता है. Who determines whether the two organism or species will be exactly similar or not. जो स्पीसीज बर्थ देने वाला है, जिस स्पीसीज वही सेम स्पीसीज ही फॉर्म होने वाला है, ये किसकी वजह से आपको पता चलता है. द फॉर्मेशन ऑफ न्यू ऑर्गेनिजम्स of some species by the earlier existing organisms called reproduction. क्या होता है. तो फॉर्मेशन ऑफ सेम स्पीसीज बाय द एग्जिस्टिंग ऑर्गेनिज्म. जब जैसे कि डॉग है तो पपीज को बर्थ देते हैं, तो डॉग जैसे ही पपीज होते हैं तो जन्म देते हैं, तो उसे हम बोलेंगे रिप्रोडक्शन. Reproduction is one of the various important characters of living organism. It also one of the various reasons responsible for the evolution of each species. Evolution के लिए भी ये हर एक species के evolution के लिए भी बहुत ही जिम्मेदार है, बहुत ही ज़रूरी है. The living organism reproduction occurs mainly by two methods. Those two methods are sexual reproduction and asexual reproduction. We are going to continue this chapter in our next lecture. You have to please read this chapter once, then it's going to be easy to understand. Okay, and if you have any kind of question, you may ask me, and whatever homework is given, please do it and send me on my WhatsApp number. If any queries are there related to topic, that also you send me on my WhatsApp number. Till today, then goodbye.